Hi everyone, I'm Sonia from the Unacademy and CodeChef team. I hope all of you can see me and hear me. Hey everyone, we'll start the class in a couple of minutes. We'll start the session, in a couple of minutes. Wait for some more of us to join in. Hi, good evening. How are you guys doing? How many of you here are new to our Unacademy session? Is this the first time that you're attending a session from Unacademy and CodeChef, or have you attended before? Hey Shubham. Hi Tushar, good evening. First time. Okay, Shubham, this is the first time that you're attending an Unacademy session. Hi Shiv Prasad, this is also your first time. Adarsh, your first time as well. Hey Sapna, Tushar. Adarsh, hi. Good to see you guys here. Great. Guys, we'll wait for 1 or 2 minutes. We'll wait for 2 minutes exactly. Start the session at 7:35. In the meanwhile, why don't you guys tell me are you in college right now, or are you working professionals? And if you're in college, which year of college are you in? I'm guessing most of you would be in your third year of college doing computer science. Yeah. Awesome. Final year, third year, second year, ECE branch. Hey Shubham. Wonderful. Great, great. Third year. Awesome. Okay. Good. Yeah. You guys are in the final few years of your learning in college, and I'm guessing that all of you are now preparing for placements to get placed in amazing technology and product companies. Yeah. Uh, Okay, so today's session, guys, is an informative session to tell you the learning batches that we are launching for all levels of programmers. So all level of programming, whether you're a beginner, intermediate, or an advanced level learner for programming, I'm going to tell you about some of the batches that we at Unacademy and CodeChef are launching that are going to be very helpful for you. Uh, Okay, Manoj, you want to understand the mathematical foundation for machine learning. What is the type of preparation you need to do? Manoj, the session is focused towards comparative programming. There are a couple of concepts that you will learn over here that are applicable to analytics and machine learning. Likewise, I think you'll be able to see them once I proceed in the presentation. Okay. Ankit, you're saying that you've already passed out, but you are looking for an opportunity. Okay. I think this session I'll tell you some of the batches that we're launching soon, and you can think about joining them, and then you will be able to get ready for all your for all your interviews in these top companies. Awesome. I think okay, it's 7:35. Let's start the session. I'm going to be sharing my screen right now, and okay, and then we can start. Okay. All right. Um,
For some of you who have joined the session right now, I'm going to start by introducing myself, then talk about a couple of batches that we're starting at Academy and CodeChef. Towards the end of the session, I will take some questions that you have. Some of you may be asking questions right now on YouTube and LinkedIn. I will not be able to see this right now, but when I take questions towards the end of the session, you can feel free to ask me at that time. I will answer all of them for you. Please don't worry. So let me begin. I'm Sonia. I'm Sonia Motwani. I'm from the Unacademy and the CodeChef team. I am a part of the competitive programming educators that are there on the platform, and I'm one of the educators that has been taking special classes, that has been talking about the new batches, and will be taking courses on the platform. So at Unacademy and CodeChef, we are launching 3 batches that I'm going to be talking about. One of them is Everest 3.0, the other one's Victor, and the last one is Striker. These 3 batches are for people, are for learners who come who come at any level of learning in competitive programming. So whether you're a beginner who does not know competitive programming at all, you are an intermediate learner who has some idea and wants to learn very advanced concepts, or you want to specifically focus on one part of competitive programming that will help you get placements, these batches have been created specifically for you guys in that format. Right? The first batch that I'm going to be talking about, in fact, that'll come after a couple of slides, is one of our best selling, is one of our best performing courses. And I know a lot of students who have benefited from the course, and I think you will also benefit. So, what I'm going to tell you in today's session is one, what is it that you get in a subscription with Unacademy and CodeChef? How is it that you can join these batches? And who are the educators? What is going to be taught to you every week? Right, so each of these courses, week by week split of what will be taught to you is something I will cover. So you will be able to understand whether you fit into the course, what are the details of the topics that you will be taught, whether it will be helpful for you or not. All of these things you will be able to understand for yourself. Okay, let me begin the session. So as I was telling before, there are batches that we are launching for students at any level of learning in competitive programming. The first course that I will tell you about is Python. The name of the course is Python, but it is a course on fundamentals and data structures. This course is for a period of 4 months. Right? It has already started. This course has started on 24th May already. And while 1 or 2 classes of the course have already happened, it is not too late for you to join in. Right? This is a 4-month course where we teach you everything from the fundamentals of data structures, which is very, very essential for anybody who's learning competitive programming. The name of the course is Python. The second course that I'm going to talk about is Everest 3.0. This is an 11-month course. The 11-month course, this is our best performing course, the course that I was just talking about. The 11-month course covers everything on programming, right? Right from the basics, what is programming, why programming, very basics of data structure, sorting, searching, algorithm, all of these details. This is an 11-month course. सो ये 11 महीने में आपको सारा बेसिक से लेके इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल सिखाया जाएगा. The Everest 3.0 batch is the name of the batch. If you see it, Everest 3.0 is the name. So this is the 3rd time that we are launching this particular batch. This is an exclusive batch which is launching on 1st of June, which is actually launching tomorrow. So if this is something that you are interested in, if your resolution is to become an expert level programmer by next year, by next year May, if you're going to start applying to college, applying to internships, applying to companies, and from your college, this course will help you get placed in the top companies. Right? This is again our best performing course at Unacademy. The other course that we have is Victor. So as you can see, Victor is a 6-month course and is a concise course for intermediate programmers. Now, अगर आपको programming के basics already आते हैं, if you are a beginner level programmer and if you want to brush up only on your intermediary and difficult advanced topics in competitive programming, then this is the course that you should be joining in. This course has already started today. आज इसका एक live class already हो गया है, but you can always find the recording on Unacademy platform and join this course and attend all our live classes from now onwards. This is a 6-month course. 6 months में हम आपको सारे intermediate और advanced topics सिखाएंगे competitive programming के,
ये काफ़ी कंसाइज कोर्स है। इसमें बिगिनर लेवल के कोई टॉपिक्स नहीं सिखाए जाएंगे। इसमें जो सारे बिगिनर लेवल टॉपिक्स है वो अज्यूम किया जाएगा कि आपको ऑलरेडी पता है, एंड इंटरमीडिएट टॉपिक्स से सिखाया जाएगा शुरू से। ये 6 मंथ के कोर्स में आपको इतनी सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, बहुत कंसाइज तरीके से बनाया गया है, स्पेसिफिकली फोकसिंग टुवर्ड्स प्लेसमेंट, फोकसिंग टुवर्ड्स इंटरव्यूज। इस कोर्स को करने के बाद बहुत सारे हमारे लर्नर्स, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स के काफ़ी अच्छे जॉब्स लग चुके हैं। So this is another one of our courses which has performed really very well. Striker is a 9-month course on data structure fundamentals with curated problem solving. So Striker जो हमारा कोर्स है, इसमें डेटा स्ट्रक्चर्स के सारे बेसिक्स सिखाए जाते हैं। इंटरमीडिएट एंड एडवांस टॉपिक सिखाने के बाद आपको क्यूरेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस कराई जाती है। दिस इज अ 9-month कोर्स। 9 months में हम आपको सारी चीजें ना वेरी रिलैक्स्ड फॉर्मेट सिखाते हैं। तो आई एम श्योर आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स फॉर्म्स द वेरी बेसिक्स ऑफ कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग, राइट? यू कैन नॉट रियली डू वेरी वेल इन कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग अनलेस यू आर क्लियर विद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो ये स्ट्राइकर का जो कोर्स है, ये स्ट्राइकर कोर्स जो 9 month का कोर्स है, विच इज अगेन स्टार्टेड टुडे ऑलरेडी, ये 9 months में आपको सारे डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लैरिफाई कर देगा, एंड क्यूरेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, और इंटरव्यूज में जब आप बैठेंगे आप बहुत कॉन्फिडेंटली उनको रिजॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को, राइट? सो अगर आपका गोल है, आपका एम है किसी टॉप टेक कंपनी में जॉब मिलना, या आप एक्सपर्ट लेवल प्रोग्रामर बनना चाहते हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और बाय द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, then these are the courses that you should be looking at depending on the amount of time you have and the level of programming that you already know. You can choose whichever course would be suitable for you, and then you can join the course. Everest 3.0 स्टार्टिंग टुमारो। इसका फर्स्ट लाइव क्लास कल होने वाला है। ये कंप्लीट कोर्स ऑन प्रोग्रामिंग है, एंड टू एंड आपको सारे बेसिक्स से सब कुछ सिखाया जाएगा। पाइथन कोर्स जो है ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इसमें हम फंडामेंटल्स एंड डेटा स्ट्रक्चर सारा कवर करेंगे 4 months में। आप अगर देखेंगे तो पाइथन और स्ट्राइकर हमारे 2 कोर्सेज हैं जो डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर हैं। पाइथन का जो कोर्स है वो काफ़ी शॉर्ट टाइम में आपको सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, और स्ट्राइकर वाले कोर्स में आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सारे कॉन्सेप्ट फ्रॉम द बेसिक टू एन एडवांस लेवल सारे सिखाए जा रहे हैं। एंड देयर इज क्यूरेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग टू इंश्योर दैट एवरीथिंग दैट यू लर्न इन थियोरी यू आर एबल टू गिव टाइम टू लर्निंग इट इन प्रैक्टिकल एज वेल, right? Again, all of these things, all of these batches you can join with us at a cost of less than 90 rupees per day, right? So less than 90 rupees per day. This is cheaper than a McDonald's Happy Meal or 1 liter petrol in most of the cities, but this is how low investment you have to make to join one of our batches, and the returns of this obviously are really very high. All right. In a subscription with an academy, in a subscription with an academy and CodeChef, there are a lot of benefits that you get. So पहला तो है structured learning path। आपका जो पूरा learning है 6 months, 4 months, 8 months, 11 months, जो भी आपका learning path आपने चूज किया, जिस भी बैच को आपने ज्वाइन किया है, उसमें काफी structured learning path create किया जाता है, where week by week you are taught concepts, you are taught newer things, and everything that you learn has been taught in a chronological manner, which means आपको basic topics से सिखाया जाता है और फिर आगे जाके build up करते हैं intermediate और advanced topics पे। ये structured learning path से basically आप जब from scratch चीज़ें सीख रहे होते हैं तो आपका जो foundation है वो बहुत strong हो जाता है। When your foundation is strong, of course everything on top of it becomes very very clear in learning, right? With an Unacademy subscription, you get unlimited access to all batches and courses. So whether you are someone who wants to study for UPSC and prepare competitive programming together, or is giving IIT, JEE and wants to brush up on their competitive programming skills, there are a lot of young learners with us who are in class 10, class 11, class 12, who are joining these batches. And this subscription is not just for one platform, not just for one particular batch or one particular course. You can have multiple goals and you can join any or all batches and courses under the same subscription, right? अगर आप competitive programming की बैच ज्वाइन करते हैं तो आप competitive programming इतना thoroughly learn कर पाएंगे कि आप successfully सारे ICPC code jam जैसे competitions में compete कर पाएंगे। आई एम श्योर आप लोग जो ऑलरेडी 2nd year 3rd year engineering में हैं, who are learning computer science in college,
know the importance of having ranks on platforms like ICPC and CodeJam. Right? It's very prestigious to have even competed on these platforms. इसमें और आपको ये स्ट्रेंथ ऑफ कम्पीटिंग तब आएगा, आपको ये कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपने सारे कॉन्सेप्ट्स बेसिक लेवल पे सीखे हुए होंगे. Right, to be able to successfully contest in competitions also, you need to know all of these basic intermediate level skills, and all of these things are what we will teach you at Unacademy. Right, like I was saying before, हमारे सारे courses जो हैं वो ऐसे create किए गए हैं कि eventually आपका जो end goal है, which is getting placed in good companies, उसकी तरफ aligned हो. तो हमारे सारे हर week में जो हम चीज़ें सिखाते हैं उसके साथ आपको practice करने के लिए काफ़ी सारी problems देते हैं. And we ensure that our courses help you crack interviews of top product companies. Right? It's very, very essential to know what is going to be asked in interviews. सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम सीख के थ्योरी में और प्रैक्टिकल में अप्लाई करके अगर आपको ये नहीं पता है कि इंटरव्यूज में क्या पूछा जाएगा, या आप अगर उस कॉन्सेप्ट के साथ थरो नहीं रहेंगे, तो आपका लर्निंग थोड़ा फ्यूटाइल भी हो सकता है. हमारे कोर्सेज इस तरीके से क्रिएट किए गए हैं कि आप you are able to crack interviews of all the top product companies, right? We ensure that our courses are aligned in that direction, focused in that direction, which is also why the people that are teaching you all of these courses are the best coders of India, right? They are the ones who are working at these top product companies as well. People who are working at companies like Flipkart, LinkedIn, Google, Facebook, they are already software development engineers at these companies, are using competitive programming. They are the ones who are going to be teaching you this course so that you are able to crack interviews and join companies with them, right? Again, all of these things at less than 90 rupees per day. Very, very cheap cost, very high return on investment. You get so many benefits in just one subscription with Unacademy, right? Like I was saying, 4, 6, 8, 10 महीने, 12 महीनों में आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं इन कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग, एडवांस प्रोग्रामिंग की लेवल तक आप पहुंच सकते हैं. एंड द बेनिफिट्स ऑफ दिस आर मैनीफोल्ड, ऑफ कोर्स, but the first step is for you to make a decision on which batch you will be joining, what kind of a learning do you want to do, and what is your eventual goal out of this, right? That's when you will be able to decide on a batch. A question that a lot of people have in their mind and a lot of people ask is, why can't we learn with the free classes that are there on Unacademy, or why can't we look at YouTube videos and learn, right? What is it that the Unacademy subscription gives us that is so different? Unacademy subscription में ऐसा क्या है, या ये courses में ऐसा क्या है जो हमें अभी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल रहा है, या जो हमें YouTube के वीडियोस देख के नहीं मिलेगा? एक तो लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होते हैं, योर लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस विद द टॉप एजुकेटर्स, पीपल हु आर वर्किंग एट कंपनीज दैट यू वांट टू जॉइन. इन लोगों के साथ जब लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होते हैं, वो आपको सारी चीजें बेसिक से सिखा रहे होते हैं. आपको कभी भी इन सेशंस में डाउट्स आते हैं, यू कैन ऑलवेज गेट दिस डाउट्स रिजॉल्व्ड लाइव ड्यूरिंग द सेशन विद दीज एजुकेटर्स. This is not something that you get by learning on YouTube, by learning on sessions that are already pre-recorded probably and freely available on Unacademy as well. Unacademy पे भी बहुत सारे sessions आपके पास available होते हैं for beginner, intermediate and advanced level students, right? And they have been created so that we teach you all of these concepts, but because आपको same instructor नहीं पढ़ा रहे होते continuously, week on week आपके classes नहीं होते, structured learning path नहीं होता है उनमें, which is why sometimes your learning can go a little haywire. But जब आपके live interactive classes होते हैं educators के साथ, आप सारे doubts, आपके questions पूछ सकते हैं during the sessions, and you can have these doubts resolved by the top educators during your classes. एक classes तो online Unacademy platform पे चलते हैं, but apart from this simultaneously आपको जो प्रैक्टिस करनी है प्रॉब्लम्स, CodeChef प्लेटफॉर्म का एक्सेस आपको फ्री रहता है. एजुकेटर्स टेल यू व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड बी प्रैक्टिसिंग. एजुकेटर्स टीच यू द कॉन्सेप्ट्स एंड देन सजेस्ट यू द काइंड ऑफ क्यूरेटेड प्रॉब्लम्स दैट यू शुड बी सॉल्विंग. तो जो आप सीख रहे हैं उसी के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं CodeChef प्लेटफॉर्म पे, और सारे कॉन्सेप्ट्स आप रियल टाइम में अप्लाई कर पाएंगे. तो आपकी जो लर्निंग है वो ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है. CodeChef प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स अवेलेबल हैं. एनी अदर ऑनलाइन जजेस वाले प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं. पर आपको जो क्लासेस में सिखाया जा रहा है along with actually practicing those concepts in the problems is what strengthens it more, right? तो ये Unacademy प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन
CodeChef पे relevant practice problems करने का opportunity, curated set of problems for your learning, ये दोनों चीजें जब एक साथ मिलती हैं, आपकी theoretical learning और practical learning एक साथ आ जाती हैं. उसके benefits I'm sure आप लोगों को already पता है. This is not the first time that you are experiencing only theory and only practical learning, right? Even when you've attended college and classes, theory classes and practical classes, जब साथ में आप theory की learnings practical implement करते हैं, तब आप देखते हैं कि कितने benefits होते हैं उसमें, right? इन दोनों चीजों के साथ आपको एक डाउट सपोर्ट प्लेटफॉर्म मिलता है. So in case that you get stuck in any problem in the class, right? Any problem during coding, कहीं आप अटक जा रहे हो और आप proceed नहीं कर पा रहे हैं, you can always get all of these doubts resolved by an expert panel of teaching assistants and community members instantly. ये बेनिफिट बहुत कम जगह पे मिलता है आपको. जब मैं ऑनलाइन कुछ भी सीख रही होती हूँ, आई नो दिस दैट आई गेट स्टक समटाइम्स. और जब वीकली क्लासेस हो रहे होते हैं, मैं एक हफ्ते अगर मंडे को कुछ सिखाया गया, मैं ट्यूसडे को अगर किसी बात पे अटक गई, तो वो मैं नेक्स्ट मंडे ही रिजॉल्व कर पाती हूँ, राइट? ये सारी चीजें अगर हमारी लर्निंग में आ जाती है, तो लर्निंग थोड़ी हिंडर हो जाती है, राइट? मोमेंटम टूट जाता है, फिर इंटरेस्ट इतना नहीं आता है. We've realized this problem at Unacademy and CodeChef, which is why we give you a doubt support also, which means that if you get stuck in any of the learnings in online classes or any practical application when you are practicing problems on CodeChef, ये सारी चीजें आप पूछ सकते हैं with our doubt support platform. Our expert panel of teaching assistants and community members will help you instantly with them. तो आपकी learning में कभी lagging नहीं आएगी. अगर आपकी learning में lagging नहीं आएगी, आपका momentum बना रहेगा, of course ये learning process काफी successful रहेगा. Okay, before I begin telling you about the week wise batch structure for our courses, I will just go back and see if you guys have asked me any questions and try and answer them for you. Let's take 2 minutes and you can ask me any questions that you want. After that, we will begin with topic wise batch structure every week, what we teach you in these batches. Okay. Okay, so some of you students are asking, Ashish, you want to understand how you can get internships. Ashish, internships के लिए there are a lot of platforms where you can just apply for jobs and get. There's Internshala and many other internship platforms. You can just look for internships. Just Google पे type कीजिए, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे. I'm sure that will help you out. Abhishek, you want to understand if the lectures are for beginners? Abhishek, yes, we have a specific batch which is for beginners. अगर आपको comparative programming में कुछ भी नहीं आता, आपको programming में भी कुछ नहीं आता है और आप starting से सब कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमारा Everest 3.0 बैच है जो कल स्टार्ट हो रहा है इनफैक्ट. और ये सारे लेक्चर्स जो हैं इसमें ये सब बिगिनर लेवल के लिए ही हैं. आप बिगिनर लेवल की बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं एंड योर लर्निंग इज गोइंग टू बी राइट फ्रॉम द बेसिक्स, राइट? आई होप दिस हेल्प्स यू. व्हाई डोंट यू गो ऑन टू द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म and look out for joining this batch. I will tell you in a couple of minutes. I will start talking about what we teach you in this Everest 3.0 batch, Abhishek. So why don't you wait, hang on for some time, and I'll tell you. All right. Ankit, you were saying that you have applied a lot but did not call. Ankit, I think you're talking about your job application. Ankit, why don't you upskill yourself? थोड़ा सा आप अपनी skill improve कीजिए, आप थोड़ी और नई चीजें सीखिए. In the meanwhile, while you are looking out for a job as well, कभी कभी ये हो जाता है कि हमारे पास जो information रहती है, जो हमारी learning होती है, वो थोड़ी outdated हो गई होती है. Right? When our learning gets outdated, it becomes difficult to get a job. So I think that could help you out. Bharat, you want to understand if this is free or paid? Bharat, there are a lot of sessions on Unacademy platform which are free of cost as well. But the 3 batches that I'm talking about are paid. Let me tell you what are we teaching in these 3 or 4 batches, and then you can make a decision on whether you want to join them or not. Yeah. Sapna, hey, you're from Canada. Hi, Sapna. I hope everything is good at your end in Canada. You want to understand the timings of these sessions. Sapna, you can get the details of this session by going on to Unacademy platform. Go to Unacademy website, choose your goal as competitive programming,
because those are the set of classes that you're looking to attend. Once you choose competitive programming, you will see that there are these batches that you can join, and in the batches also you have you can always see what are the timings of the live classes. But again, Sapna, even if you miss out on the live classes, there are always recorded sessions that are available to you. You can see the recording at your own convenience, practice problems on CodeChef platform, and if you have any doubts, we have a doubt support platform for you as well. Yeah, I hope this answers your question, Sapna. Guys, I hope there are no further questions, and I will go ahead and tell you what we are going to be teaching you week on week in our batches. Okay. All right. So let me start with the first batch, which is our striker batch. The striker batch has already launched today, and this is a course on data structure fundamentals with curated problem solving. This is a 9-month course, right? This is a 9-month course. It has started today, and in this we are covering data structure fundamentals with curated problem solving. तो इस कोर्स में हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से. आई थिंक अ कपल ऑफ यू वर आस्किंग कि ये बेसिक बिगिनर्स के लिए सही है या नहीं कोर्सेज. ये कोर्स स्पेसिफिकली स्ट्राइकर कोर्स जो आज चालू हो चुका है, ये बिगिनर फ्रेंडली कोर्स है. इसमें फर्स्ट फ्यू वीक्स में, फर्स्ट मंथ में अगर आप देखेंगे वीक 1 to 5 में हम सारे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स कवर करते हैं, राइट. सो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स, फंडामेंटल्स एंड इंटरव्यू स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग इज व्हाट वी लुक एट, right? In week 6 to 10 we cover the additional concepts in C++. So आपके सारे C++ के concepts cover होते हैं. इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, start learning about things like greedy algorithms, advanced data structures, square root decomposition, complex problems, number theory and interview questions. मैं जैसे पहले आपको बता रही थी, हमारे सारे कोर्सेज ऐसे क्रिएट किए गए हैं, ऐसे अलाइन किए गए हैं that we help you get placed in the top product companies. We help you crack interviews of big tech companies. You will see in this course itself, इसी कोर्स में, इसी स्ट्रक्चर में, ये आपका जो 16-17 हफ्ते का स्ट्रक्चर है स्ट्राइकर बैच के लिए, इसी में आप देखेंगे कि आपके पहले हफ्ते में ही इंटरव्यू स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दिया जा रहा है, राइट. इन वीक 1 to 5 जैसे ही हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, वैसे ही हम आपके इंटरव्यू स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करने लगते हैं. फिर नेक्स्ट मंथ में जब हम एडिशनल कॉन्सेप्ट सिखा रहे होते हैं, उसके बाद जब ग्रीडी एल्गोरिथम्स में हम नई चीजें सीख रहे हैं, उसके बाद हम क्लासिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करते हैं. तो हमारा सारा कोर्स जो क्रिएट किया गया है, हमारे सारे इंस्ट्रक्टर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं सब चीजें, वो ऐसे क्रिएट किया गया है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रूव हो, आप इंटरव्यूज में अच्छे से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, एंड वी आर हेल्पिंग यू विद इंटरव्यू क्वेश्चंस एज वेल. If you see week 16 and 17, we again focus on interview questions over here, right? So our course has been created in a way so that you get the best experience and you are able to get something out of it. You are able to get placed in the top product companies. In week 18 to 20, so हमने देखा कि स्ट्राइकर कोर्स जो आज चालू हो चुका है, डेटा स्ट्रक्चर फंडामेंटल्स इसमें हम कवर कर रहे हैं. इसमें हम वीक 17 तक, विच इज 4 months तक हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं. बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, C++ के कॉन्सेप्ट्स, ग्रीडी एल्गोरिथम, सम मोर डेटा स्ट्रक्चर के एडवांस टॉपिक्स लाइक स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, नंबर थ्योरी एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस हम सारे कवर करते हैं. इसके बाद हम थोड़ा गेयर चेंज करते हैं और हम थोड़े और एडवांस टॉपिक्स पे जाते हैं. तो इसमें फॉर एग्जाम्पल रिकर्जन ऑन डीपी इज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी स्टार्ट लर्निंग. Then we proceed to learning discrete mathematics, graph algorithms, segment trees, advanced dynamic programming, computational geometry, right? तो हमारे जो ये सारे टॉपिक्स हैं, हमारे जो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम वीक 18 से वीक 40 में कवर कर रहे होते हैं, इसमें भी आप देखेंगे कि एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काफी ध्यान दिया गया है, राइट. इसमें काफी सारे नए कॉन्सेप्ट्स हैं. तो जब आप ये चीजें लर्न कर रहे होंगे ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म विद आवर एजुकेटर्स, आपको क्यूरेटेड प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे कोडशेफ प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करने के लिए. तो जो आप फॉर एग्जांपल डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सीखेंगे वीक 21 से 25 में, वो आप अप्लाई भी कर पाएंगे कोडशेफ प्लेटफॉर्म पे जाके, राइट. दिस इज हाउ वी क्रिएटेड द कोर्स फॉर यू. सो ये जो स्ट्राइकर कोर्स है, ये 31 में, विच इज टुडे, आज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, कि डेटा स्ट्रक्चर फंडामेंटल्स को कवर कर रहा है, एंड इसमें क्यूरेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काफी फोकस किया गया है.
दिस इज अ 9 month कोर्स, दिस इज अ 9 month कोर्स विच इज अ 36 week कोर्स। पर आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने वीक 40 तक एक्सटेंड कर लिया है, बिकॉज काफी सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स के बीच में हम आपको टाइम भी देते हैं कि आप कोडशेफ प्लेटफॉर्म पे जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और आपको ब्रीदिंग स्पेस मिले, आपको नए टॉपिक्स लर्न करने का टाइम एंड स्पेस मिले। लाइक आई वाज सेइंग, हमारे सारे हर दूसरे हफ्ते में हमने कोर्स ऐसे क्रिएट किया है कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरव्यू क्वेश्चंस और एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। सो दिस इज आवर बैच वाइज टॉपिक वाइज स्ट्रक्चर फॉर आवर स्ट्राइकर कोर्स। ऑलराइट, for the next course is Everest 3.0 course. This is one of our best performing courses. आप अगर देखेंगे इसका नाम भी है Everest 3.0। 3.0 is because this is the third batch that we are launching. ये हम तीसरी बार ये बैच लॉन्च कर रहे हैं। ये 11 महीने का कंप्लीट कोर्स है ऑन प्रोग्रामिंग विच इज स्टार्टिंग टुमारो। राइट, दिस कोर्स स्टार्ट्स टुमारो। 11 months कोर्स टीचिंग यू एवरीथिंग एंड टू एंड। ये एवरेस्ट 3.0 कोर्स, जैसे एवरेस्ट नाम है, जैसे you're climbing माउंट एवरेस्ट, अब आपको एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना पड़ता है, स्मॉल लिटिल स्टेप्स दैट यू हैव टू टेक। ये एवरेस्ट कोर्स भी वैसे क्रिएट किया गया है। 11 months में आपको धीरे धीरे करके नए नए टॉपिक सिखाए जाते हैं कि आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट बन जाए। राइट, सो एवरेस्ट 3.0 जो कोर्स है ये which is starting tomorrow, इसमें हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। राइट, सो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्रामिंग इज व्हाट वी लुक एट फर्स्ट। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, जिसको अगर प्रोग्रामिंग नहीं भी आती है, इज एन एब्सोल्यूट बिगिनर इन प्रोग्रामिंग, ये उनके लिए भी सही है। राइट, सो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्रामिंग के साथ स्टार्ट करते हैं हम। देन वी कवर थिंग्स लाइक इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस हम इसमें इसीलिए यूज करते हैं बिकॉज सी प्लस प्लस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग। वी स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। मतलब अगर आपको सी प्लस प्लस आपने कभी देखा भी नहीं और आप पहली बार यूज कर रहे हैं, ये तब भी आपके लिए रेलेवेंट होगा। राइट, sorting and searching algorithms is what we look at in week 6 to 10। आप देखेंगे बिकॉज न्यू कॉन्सेप्ट, काफी नई चीज आप सीख रहे हैं, आपको 2-3 हफ्ते दिए गए हैं जस्ट ये सीखने के लिए। उसके बाद हम बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स पे स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपके सारे फंडामेंटल्स एंड इंटरव्यू स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दिया जाता है। Again, because our courses have been created so that you are able to solve problems, you get placed in top tech companies and top product companies, which is why interview questions, interview specific problem solving, classical problem solving are the things that we look at। राइट, अब आप देखेंगे वीक 2 to 5 में हमने इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस किया था, फिर 1-2 नए कॉन्सेप्ट सीखे, फिर हमने एडिशनल कॉन्सेप्ट्स इन सी प्लस प्लस सीखे। राइट, तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम मोर थ्योरी एंड देन अगेन एडिशनल कॉन्सेप्ट्स इन सी प्लस प्लस सीखे। इसमें साइमल्टेनियसली जब हम ये सारी चीजें सीख रहे हैं, तब आपको आपके मेंटर्स, आपके इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, क्यूरेटेड प्रॉब्लम्स देंगे कोडशेफ प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करने के लिए। राइट, फिर हम ग्रीडी एल्गोरिथम्स पे मूव करते हैं। ग्रीडी एल्गोरिथम्स विद क्लासिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। थोड़ा हम गेयर फिर से चेंज करते हैं और हम थोड़े इंटरमीडिएट टॉपिक्स पे आते हैं, विच इज योर एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स, स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन एंड सम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। But worry not, we give you enough time to learn all of these things and apply them as well, right? So week 22 to 25 आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, आपके नए कॉन्सेप्ट सीखने पे चला जाता है। उसके बाद हम थोड़े और एडवांस टॉपिक सीखते हैं, नंबर थ्योरी, फिर अगेन वी फोकस ऑन इंटरव्यू क्वेश्चंस, फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ग्राफ एल्गोरिथम, सेगमेंट ट्रीज, all of these things while we are teaching you. Again, we focus extensively on problem solving in all of these weeks throughout our learning. वीक 41 में सेगमेंट ट्रीज के बाद हम थोड़ा और एडवांस टॉपिक्स पे मूव करते हैं, विच इज योर एडवांस डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री। हम इन 2 एडवांस टॉपिक्स पे ये कोर्स को एंड करते हैं। इसके बाद आपको काफी सारे क्यूरेटेड प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं कोडशेफ प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करने के लिए। Once you are able to solve those problems, once you successfully solve those problems, you will realize that you would have come from a very beginner to a very advanced level programming professional in a period of 11 months. तो ये 11 months के पीरियड में आप जो सारी चीजें एकदम बेसिक से सीखते हैं, you will realize कि towards the end of it आप काफी complex problems भी solve कर पा रहे हैं, even as a beginner who did not know programming at all। तो ये हमारा बैच ही इसी तरह क्रिएट किया गया है कि आपको सारी चीजें बेसिक से सिखाए और काफी ज्यादा फोकस रहे इंटरव्यू क्वेश्चंस, इंटरव्यू स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। ऑलराइट, I hope everybody is understood. If you guys have any questions, let me just see. If you have any questions, please feel free to ask me.
I want to understand. I want to try and answer them for you. Yeah. Okay. Rama Teja, hi. You are a BTech computer science pass out with 3 years of experience in Android development. You want to get into tier one product based companies. What are the skills that would be expected? Should you focus on DSA or any other topics? Ramadej, I'm sure you already know DSA is the base for getting a job in all of these tier one product based companies. And I was talking about one of the courses which is focused specifically towards data structures and algorithms. I think that is one of the courses that you should take to upskill yourself and then get placed in these companies. I wish you all the best, Ramatej. Why don't you stick to the end of the session, and I will tell you of a special coupon code. I will give you a special coupon code in which you can get a discount on the courses that are being offered. Yeah. Okay. Hari, which programming languages used to kill COVID? Hey Hari, fun question. I hope you're enjoying the session. Why don't you see what we're teaching you in the other batches as well? Samarth, pricing and all for all the courses. Samarth, I'll come to it in a couple of slides. Please be patient. You want to access and register for the course? I'll talk about all of these things. Please don't worry. Yeah. Okay. Let me go back to the presentation. All right. So we understood and we spoke about two batches that we are starting. One is Everest 3.0 batch, which is an 11-month course on competitive programming, beginner friendly course. Starts tomorrow, and we teach you everything right from the basics. The name of the course is Everest 3.0. The other batch that we spoke about was Striker batch, which is data structure fundamentals with curated problem solving. I think Ramatej, this would be a very specific, very relevant course for you specifically, because इसमें आप देखिए data structure fundamentals with curated problem solving पे focus किया जा रहा है. So we not only teach you these concepts, but we also give you problems to solve so that you can strengthen these concepts. Once you strengthen these concepts and you are able to apply them when you write this in your resume and when you talk about it in your interviews, all of these top tech companies will be able to identify that you have done this. It also adds a lot of credibility to your resume. Yeah. So Striker batch already started today. इसमें डेटा स्ट्रक्चर फंडामेंटल्स विद क्यूरेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हम फोकस कर रहे हैं. ये 9 मंथ का कोर्स है हमारा. तो हमने इन दोनों कोर्सेज में हर हफ्ते क्या पढ़ाया जाएगा, दैट्स व्हाट वी हैव सीन राइट नाउ. Yeah. The third batch that I'm talking about is a concise course for intermediate programmers. The name of the course is Victor. आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे Victor लिखा हुआ है. Victor is a concise course for intermediate programmers. So आप में से जो students already computer science engineering में है कॉलेज में, जिनको बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग ऑलरेडी अच्छे से पता है, ये कोर्स उन लोगों के लिए है, राइट. तो इंटरमीडिएट प्रोग्रामर्स के लिए ये कोर्स है. इसका मतलब इसमें हम बेसिक्स कवर नहीं करते हैं. ये कोर्स भी आज स्टार्ट हो चुका है, but this is a 6-month course, so there is still a lot of time for you to take all the live classes that are there with us, right. तो ये 6 month के कोर्स में अगर आप देखेंगे, आप 6 month के कोर्स में आप देखेंगे तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं ग्रीडी एल्गोरिथम्स के साथ, राइट. ग्रीडी एल्गोरिथम्स में हम क्लासिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करते हैं. Like any other course, इसमें we spend a lot of time in the first few weeks to get everyone on the same page, because ये intermediate level programmers के लिए है. काफी सारे concepts आप लोगों को first few weeks में शायद already आते हो, but हम फिर भी revise करते हैं to ensure that you are on the same page as everyone. It's always good to unlearn and relearn, and once we start with problem solving, that's when everybody understands where they stand. कितना हमको beginner level पे आता है, ये हमें समझ में आता है जब हम problem solving शुरू करते हैं, right. Week 4 to 9 we cover advanced data structures, square root decomposition. अब हमने बिगिनर लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स इसमें कवर नहीं किया, ऑब्वियसली बिकॉज एज अ बिगिनर लेवल प्रोग्रामर दिस इज समथिंग दैट यू वुड ऑलरेडी बी फेमिलियर विद,
right? Then we focus on things like number theory, recursion on DP, discrete mathematics, graph algorithms. आप देखेंगे ये पूरे 20 वीक्स में भी हमने काफी ज्यादा फोकस दिया है प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरव्यू क्वेश्चंस पे. तो हम जो भी चीजें आपको सिखा रहे होते हैं ये विक्टर कोर्स में, ये हम आपको सारी चीजें प्रैक्टिस भी करवा रहे होते हैं ऑन द कोडशेफ प्लेटफॉर्म. तो आपकी लर्निंग जो है वो स्ट्रेंथन हो जाती है, राइट? आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ऑल ऑफ दीज कोर्सेज आर नॉट जस्ट थियोरिटिकल कोर्सेज बट ऑल्सो हैव प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अटैच टू देम, राइट? तो वीक 1 to 3 में हम जब इंटरमीडिएट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, तब इंटरमीडिएट टॉपिक में भी सब लोगों को कितनी एक्चुअली प्रोग्रामिंग ऑलरेडी आती है, ये इस लेवल पे हमको पता चल जाता है, क्योंकि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग वहां से शुरू कर देते हैं. तो ये विक्टर कोर्स जो है विच इज स्टार्टेड टुडे ऑलरेडी इज अ कोर्स क्रिएटेड फॉर इंटरमीडिएट प्रोग्रामर्स. So for all those of you who are in third year of engineering, probably who have already learned a little bit of computer science, थोड़ा बहुत बिगिनर लेवल आपको पता है, ये कोर्स आप लोगों के लिए क्रिएट किया गया है, आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर किया गया है, राइट? अब हम वीक 21-22 में जब ग्राफ एल्गोरिथम सीखते हैं, उसके बाद हम थोड़ा फिर से गियर चेंज करते हैं और हम एडवांस टॉपिक्स पे आ जाते हैं. तो आप देखेंगे कि हम लास्ट 10-12 वीक्स में हम लास्ट 2.5-3 मंथ्स में हम सेगमेंट ट्रीज, एडवांस डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री पे फोकस करते हैं. अब ये सब बिकॉज नए कॉन्सेप्ट्स है, ये सब बिकॉज एडवांस लेवल टॉपिक्स हैं, हम काफी टाइम देते हैं इन सब चीजों को सीखने के लिए. तो ये कंसाइज कोर्स है, जिसका मतलब आपको जब आप नए सारे टॉपिक सीख रहे होंगे, वाइल आपको टाइम दिया गया है, बट आप जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे सारे प्रॉब्लम्स, आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ आ रही होगी. Which is why जब intermediate programmers के लिए create किया गया, it might be good to just brush up on all your basics of programming before you start this course, right? While we cover all of these things, while everything is taken care of in problem solving, it's very good to brush up on all the basics before you start joining, because you will realize that in 5 months you will be learning advanced topics like segment trees and advanced dynamic programming, computational geometry. And again, while these topics might seem very heavy, these are the topics that interviews में पूछा जाता है, जिनके बारे में जो टॉप टेक कंपनीज चाहती हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो इन टॉपिक्स में, राइट? डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स ऑब्वियसली फॉर्म्स द बेसिक्स ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, व्हिच इज व्हाई डीएसए पे भी इतना फोकस है, राइट? I've told you all about the batches. I've told you what are we teaching you in each and every week, what is being taught. So just to give you a little bit of information about our educators, जो लोग आपको ये लाइव क्लासेस सिखाने वाले हैं उनके बारे में भी पता होना is very good. So our educators are ICPC World Finalists, Codeforce Grandmasters and alumni of top product companies. I'm sure आप लोगों को पता है कि ICPC वर्ल्ड फाइनलिस्ट में इवन compete करना कितनी बड़ी चीज होती है. Codeforce's grandmasters, people who have been practicing on platforms, working with all of these logics day in and day out, are the ones that are going to be teaching you. Right, so if you see over here also, our educators are working at companies like LinkedIn, Flipkart, CodeChef's पे इतने high ranks है, Google, Facebook के alumni हैं, they have been teaching with us for a very very long time. एंड ये लोगों की खुद की लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग है कि जब आपको सिखाएंगे, ये जो भी आपको बताएंगे उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बताएंगे, तो आपकी नॉलेज और ज्यादा वैल्यू ऐड हो जाएगी, आपकी नॉलेज में और ज्यादा वैल्यू ऐड हो जाएगी. सो लर्निंग फ्रॉम दीज एजुकेटर्स, लर्निंग फ्रॉम दीज प्रोफेशनल्स इज जस्ट लाइक अ चेरी ऑन टॉप ऑफ द केक, right? So the people that are teaching you are very very advanced, very very are they themselves working at the top product companies and are coming from the most prestigious colleges in India, right? So if you see over here, most of the people on this screen also are ICPC finalists, right? There's Vivek, who's a 7 stars on CodeChef, has a brilliant rank, Codeforce's master. Everybody has 6 stars, 7 stars over here. So all of these people are very expert level educators to be teaching you these concepts. Coming to the part that everybody was asking about, how is it that you can join these classes? So to join these classes, there is a subscription that you will have to buy for an academy platform. अब आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है मल्टीपल फॉर्मेट्स में. आप 1 महीने के लिए खरीद सकते हैं, 3 महीने के लिए खरीद सकते हैं, 6 महीने और 12 महीने के लिए भी खरीद सकते हैं, राइट? तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फी है 6,000 रुपए, पर आप जैसे ही अपना टाइम पीरियड इंक्रीज करते जाएंगे सब्सक्रिप्शन का, आपको डिस्काउंट फर्दर मिलता जाएगा.
आप रियलाइज करेंगे कि ये जो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है इस पे आपको 54% डिस्काउंट मिल रहा है और आपको ये पूरा पड़ रहा है 33,000 रुपीज का। आप 12 महीने में इस सब्सक्रिप्शन में आपको अन अकेडमी, आपको कोड शेफ और आपको डाउट सपोर्ट प्लेटफॉर्म तीनों चीजें मिलती हैं। एंड नॉट जस्ट कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग, यू कैन ज्वाइन एनी बैच, एनी पॉसिबल कोर्स, राइट। तो इस पे बिकॉज ऑलरेडी इतना डिस्काउंट दिया गया है, विच इज वाई दिस इज वन ऑफ आवर best selling subscription. But because in the session with me there is another referral code that I can give you to give you additional 10% discount. So if you use my coupon code Sonia Motwani over here, आपको additional 10% discount मिलेगा on all of these subscriptions. तो जो 33,000 का subscription है आपको basically पड़ेगा 30,000 का, less than 30,000 का, in fact 29,000 का subscription पड़ेगा आपको। जो 6 months का subscription है वो आपको पड़ेगा almost 24,000 का। ये आपको जो ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइसेस है इन पे एडिशनल फर्दर डिस्काउंट दे रहा है ये रेफरल कोड। सो एज यू कैन सी द रेफरल कोड ऑन द स्क्रीन एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन विच इज सोनिया मोटवानी is the code that you can use to get an additional discount on the subscription for competitive programming. इस सब्सक्रिप्शन में आपको सिर्फ कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं, आपको कोई भी गोल, कोई भी क्लास, कोई भी बैच ज्वाइन करनी है आप वो कर सकते हैं। और ये जो मेरा रेफरल कोड है सोनिया मोटवानी, ये रेफरल कोड अभी रिड्यूस हो जाएगा फ्रॉम 10% to 5% इन अ कपल ऑफ डेज। तो अगर आप कोई भी बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं, दिस इज समथिंग दैट यू शुड डू रियली वेरी फास्ट, नहीं तो ये डिस्काउंट आपके लिए कम हो जाएगा। एज आई वाज सेइंग बिफोर, हमारी कुछ बैचेस आज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। एक हमारी एवरेस्ट 3.0 बैच जो है बिगिनर फ्रेंडली एंड टू एंड प्रोग्रामिंग की जो बैच है वो कल स्टार्ट हो रही है। ये एंड टू एंड प्रोग्रामिंग 11 मंथ्स का कोर्स है एवरेस्ट 3.0। ये हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग कोर्स है। ये हम थर्ड टाइम, ये हम तीसरी बार बैच लॉन्च कर रहे हैं, राइट। एवरेस्ट 3.0 इज द नेम। ये 11 मंथ का कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं देन 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन इज व्हाट यू कैन बाय। आप देखेंगे आपको ये लेस देन 3,000 रुपीज पर मंथ पे पड़ेगा। ये 33,000 का पूरा 12 मंथ का कोर्स है और इस पे भी आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है with the referral code over here. I'm sure a referral code is being displayed at your screen as well, but you can see over here also it is visible, right? तो ये 11 मंथ कोर्सेज के लिए काफी एप्ट है। 9 मंथ कोर्सेज के लिए भी आप ये ले सकते हैं क्योंकि आपको इस सब्सक्रिप्शन में नॉट जस्ट अन अकेडमी प्लेटफॉर्म बट आपको कोड शेफ का भी एक्सेस मिलता है और आपको डाउट सपोर्ट का भी एक्सेस मिलता है। सो इवन आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर लर्निंग विद अस, आप जब कोड शेफ पे कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं एंड यू गेट स्टक समवेयर, यू कैन ऑलवेज कम टू आवर डाउट सपोर्ट प्लेटफॉर्म एंड आस्क एनी क्वेश्चंस, राइट। आप देखेंगे ये 6 मंथ सब्सक्रिप्शन जो है इसमें भी आपके कुछ कोर्सेज कवर हो सकते हैं। एक 6 मंथ और 4 मंथ का कोर्स था जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। ये 6 मंथ 4 मंथ के कोर्सेज आप 6 मंथ सब्सक्रिप्शन में ले सकते हैं, पर आप देखेंगे कि ऑब्वियसली हाई एडवांटेज है अगर आप 12 मंथ सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, क्योंकि आपके पास बस ज्यादा टाइम रहता है अपने डाउट्स रिजॉल्व करने का, आपको इंटरैक्ट करने का। और हमारे अन अकेडमी में हम कॉन्स्टेंटली नए बैचेस लॉन्च कर रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली नए कोर्सेज लॉन्च कर रहे होते हैं जिसमें आप कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। सो इवन इफ यू टेक लाइक अ 4 मंथ, इवन इफ यू जॉइन लाइक अ 4 मंथ बैच विद अस, you always have the advantage of learning something new, learning something simultaneously because there are so many classes that are going on. आप अगर अभी भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, I will actually take you there right now. Even if you go to the Unacademy platform right now, you will see that there are so many batches that are going on. So many classes that are going on. So let me just take you to competitive programming page and tell you कि क्या क्या चल रहा है आज. So if you see over here, competitive programming के लिए, see there is a striker batch which is already launched, Victor batch which is already launched, and Everest 3.0 is starting on 1st of June, right? These are the instructors that I was talking about as well. Let me increase the size. ये competitive programming striker batch है, Victor batch है, and Everest 3.0 batch है. Everest 3.0 starts tomorrow, and striker and Victor batches have already been launched today. बट साइमल्टेनियसली आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ क्लासेस कॉन्स्टेंटली चल रहे होते हैं। तो इवन इफ यू हैव टेकन लाइक एन एवरेस्ट 3.0 कोर्स एंड यू आर लर्निंग कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग एंड यू आर लर्निंग प्रोग्रामिंग इन C++, आप साइमल्टेनियसली एक पाइथन का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। आपके सेम सब्सक्रिप्शन में सारी चीजें कवर हो जाती है, राइट? You can see over here there are some popular courses, there's some of the other new concept that is being taught all the time. There are a lot of recorded sessions. All of these benefits you get with us on the Unacademy, with the Unacademy subscription, right? आप Unacademy में जाके एक account create कर सकते हैं. You can choose your goal to be competitive programming over here. Competitive programming goal choose करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या classes चल रहे हैं Unacademy platform पे.
Yes. Let me go back and check if you guys have any questions. I was just saying that you can use my coupon code Sonia Motwani to get an additional 10% discount on any subscription that you end up purchasing. Okay, let me check some questions. Let me answer some questions. Would this course help an absolute novice in coding who's just joined college? Sarthak, yes. Sarthak, our Everest 3.0 course is a complete end-to-end programming course for beginners. So even if you do not know what is programming or what is C++, this course can help you learn everything right from the basics. Right? This has been curated specially for people who do not know programming at all. This is an 11-month course. So 11 months में आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी. I hope this answers your question. सारा बेसिक से सिखाया जाएगा. आप एक साल में एक्सपर्ट लेवल प्रोग्राम में बन सकते हैं. Yeah. Samarth, I hope I've been able to answer your question on accessing and registering for these courses. If you have any further questions, please feel free to ask me. Okay, I'm happy to I'm happy to use I'm happy to answer any questions that you folks might have on competitive programming, on placements, on what should we focus on in competitive programming, what are some of the essential topics to absolutely know and learn. I'm happy to answer all of those for you. Let me actually just stop sharing my screen. Partho, when should we use digit DP? What is it that you're specifically asking about? Maybe you can just iterate a little more. I'll be able to help you. There are some of you who are still joining the session right now, guys. Let me keep sharing my screen actually and tell you the subscriptions that we have available in Academy, and tell you that you can get an additional 10% discount if you join one of our if you use my coupon code and join one of our subscription batches. So the referral code at the bottom of the screen is Sonia Motwani, right? You can just use this code, and on the prices that are mentioned over here, इस पे आपको additional 10% discount मिलेगा अगर आप कोई भी subscription purchase करते हैं हमारे साथ. 12-month subscription is one of our best selling ones. अगर आप देखेंगे तो इसका cost भी काफी low है, 2,750 rupees per month, less than 3,000 a month, less than 90 rupees per day. आपके return on investment इसमें बहुत ज़्यादा होंगे. Coming to the batches that we are launching, there is Python, Everest, Victor, and Striker. These are the 4 batches. Everest 3.0 is our 11-month course. Everest 3.0 is for absolute beginners. For Sarthak, I think this will help you out. Everest 3.0 course will teach you everything right from the basics. So even if you do not know anything, even if you have not learned programming ever, आपको beginner level भी नहीं आता है, तो भी ये आप इसमें बहुत कुछ सीख पाएंगे. Yeah. I will just go to this referral code page and keep the presentation on. Let me take a few questions. Guys, if you have any questions, please feel free to ask me. I'm happy to answer them for you. But आपको referral code use करके additional discount मिल सकता है. And जो सारे batches हैं, there are 2 batches that have started today, which is your Victor and Striker course. But there is one batch which is starting tomorrow, which is Everest 3.0 11-month batch. Python का जो कोर्स है Python नाम का जो कोर्स है, which is fundamentals on data structures, has already started on 24th of May. इसके कुछ classes already live हो चुके हैं, लेकिन आपके पास recordings हमेशा available हैं to access them and to learn more. All of these things you get at less than 90 rupees per day. Again, just to reiterate, आपको ये जो subscription रहेगा Unacademy का, इसमें सिर्फ कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं, बट कोई भी कोर्स, कोई भी बैच, कोई भी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं. तो अगर आप 2 चीज़ें साइमल्टेनियसली सीखना चाहते हैं, आपके 2 गोल्स हैं, आप यूपीएससी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं पर आप कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, आप आईआईटी जेईई के लिए पढ़ाई कर रहे हैं but you also want to learn competitive programming, you can do everything within the same batch, within the same subscription, right? For those who join competitive programming, we've curated our courses to ensure that you are able to crack interviews of top product companies and are able to successfully contest in competitions like ICPC and CodeChef's.
all of this under in a subscription fee of less than 90 rupees per day, right? Less than 90 rupees per day में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी. And of course our educators are top of the class educators who are working at top product companies already, and you can choose any kind of subscription that you want under the ones that we have available, and get an additional 10% discount using my referral code, which is Sonia Motwani. All you have to do is just make up your mind, set a goal for yourself कि मुझे comparative programming सीखनी है, कौन सी चीज़ों के साथ आपको स्टार्ट करना है, बेसिक्स के साथ स्टार्ट करना है, आपको डेटा स्ट्रक्चर्स सिर्फ सीखना है, आप अगर बिगिनर लेवल प्रोग्रामर है तो सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल प्रोग्रामिंग सीखनी है, हमारे पास सारे कोर्सेज हैं आपके लिए. So Victor course is for those who already know beginner level programming, and ये intermediate और advanced level students के लिए है. Everest 3.0 एकदम beginners के लिए है, जिनको programming का P भी नहीं आता है, ये उनके लिए है. और Striker course है जो हमारा data structures पे focus कर रहा है. ये आपके placements में आपको बहुत ज़्यादा help करेगा. All right? Okay. Let's take a few questions. Abhishek, you're saying that you know programming. Which one should you use, Vector or Striker? Abhishek, because you already know a basic level of programming, what you could do is choose our Victor course. जो हमारा Victor course है, ये कंसाइज कोर्स है काफी इमीडिएट लेवल प्रोग्रामर्स के लिए, तो इसमें बेसिक्स नहीं कवर किए जाते हैं, तो आपको आखिर रेपिटेशन नहीं होगा, राइट? और आप सारे इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल टॉपिक सीख पाएंगे. पर अगर आपको लग रहा है कि आपके डेटा स्ट्रक्चर्स में ही आपको फोकस करना है और आपको बाकी एडवांस टॉपिक्स नहीं सीखने हैं, देन यू कैन जस्ट लुक एट आवर स्ट्राइकर कोर्स, विच इज आवर 9-month कोर्स ऑन डेटा स्ट्रक्चर फंडामेंटल्स विद क्यूरेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग. इस स्ट्राइकर कोर्स में क्या होगा, आपके बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स भी रिपीट हो जाएंगे. Probably not very beneficial to you, but let me tell you an advantage. अगर आप किसी एक बैच को ज्वाइन करते हैं, आपको दूसरे बैच का एक्सेस भी रहेगा. So even if you join Victor, आपके पास स्ट्राइकर का भी एक्सेस रहेगा, आप दोनों भी साइमल्टेनियसली कर पाते हैं, राइट? आप दोनों साइमल्टेनियसली कर पाएंगे, so you don't have to worry about it. I would suggest Victor is the course for you, although. I hope this answers your question, Abhishek. Preeti, you want to understand which programming language is the best for comparative programming? Preeti, I personally recommend C++. It's very user friendly. It's very extensive, and I think this is the one that I'm a little partial towards. But yeah, I hope you're able to decide as well. You can always go onto Unacademy platform. There are a lot of free classes that are available to you. So if you're not sure on which language to choose, maybe you can attend like a beginner level session for C++, Java, and Python. See which one you would be more comfortable with, and then you can choose. Yeah. Preeti, even to access the free courses, you might need a referral code. They are free of cost. You won't have to pay for them, but you can use my referral code, which is Sonia Motwani, and access the classes. I hope this helps you. Samarth Mehra. Hi, Samarth. You want to suggest some development courses for full stack and all. Samarth, the courses that we have at Unacademy are for comparative programming. But I'm sure, for your development, for your full stack and development courses, there are a lot of other platforms also that would be available. Yeah. Preeti, on Unacademy website, create an account, choose your goal as competitive programming, and you can go to special classes. So special classes are free of cost. You can see a lot of special classes already. Recorded sessions होंगे, आप कोई recorded session pick कर सकते हैं और उसको view कर सकते हैं. अब आपके लिए beginner level sessions होंगे Python में, C++ में, Java में भी. You can Unacademy website पे ही आपको मिलेंगे. Yeah. Okay. Any more questions? Any more questions? Samarth, just to help you, Unacademy also has, you can get access to full stack courses. You can have a look at a couple of free videos over there to understand whether the development course will be beneficial for you or not. And we have courses in Hindi, English for beginner level. Special class free of cost रहेंगे आपको, उसके लिए भी लेकिन referral code लगेगा. Even to access the free classes, you can use my referral code, which is Sonia Motwani. आप देख सकते हैं कुछ free classes and understand if that's the course for you, if that's the place where you want to learn full stack development. Yeah.
I hope this answers your question. All right, guys, I think we have finished our time as well. It was wonderful interacting with all of you. I hope you've been able to decide on a class for yourself. You've been able to decide on which batch you want to join and आप क्या सीखना चाहते हैं. And let me again just keep this slide open while I end the session. 4 batches हमारे launch हो रहे हैं अन अकेडमी में. 2 batches already live हो चुके हैं, which is Victor and Striker. ये विक्टर जो हमारा है कोर्स वो 6 मंथ का कोर्स है. इट इज अ कंसाइज कोर्स फॉर इंटरमीडिएट प्रोग्रामर्स. स्ट्राइकर इज अ 9 मंथ कोर्स फॉर डेटा स्ट्रक्चर फंडामेंटल्स विद क्यूरेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये दोनों कोर्सेज आज लाइव हो चुके हैं. एवरेस्ट 3.0 इज आवर बेस्ट परफॉर्मिंग कोर्स. ये उन लोगों के लिए है जिनको प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं आता है. एकदम बिगिनर लेवल कोर्स है ये, जिसमें हम एंड टू एंड प्रोग्रामिंग आपको सिखाते हैं. 11 महीने का कोर्स है, विच इज स्टार्टिंग टुमारो. बेस्ट परफॉर्मिंग कोर्स, ये हमारी 3rd बैच है इस कोर्स की. आई होप फॉर दोज हु वांट टू लर्न कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग, दिस इज द कोर्स दैट यू चूज. एक और कोर्स है हमारा पाइथन कोर्स, विच इज फंडामेंटल्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स. ये हम 4 मंथ्स में आपको सिखा रहे हैं सारी चीजें. ये कोर्स ऑलरेडी लाइव हो चुका है 27 मई को. To join any of these courses, you can buy a subscription for Unacademy Competitive Programming. आप मंथली प्लान्स चूज कर सकते हैं. हमारे पास 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ एंड 12 मंथ प्लान्स है. ये सारे प्लान्स का जो कॉस्ट है आपकी स्क्रीन पर भी विजिबल होगा. बट टू गेट एन एडिशनल 10% डिस्काउंट, इस प्राइस से और कम प्राइस, इस प्राइस पे और 10% डिस्काउंट के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, विच इज सोनिया मोटवानी. एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन आपको यहाँ येलो में दिखेगा. यू कैन यूज दिस एंड ये सारे जो सब्सक्रिप्शन है इन पे और 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा. राइट? Okay, on this note, I think I will end the session, guys. It has been wonderful interacting with you. I've really enjoyed. I hope I see you in some of my classes and batches on Unacademy and CodeChef and interact with you. Yeah? All right. Thank you so much, Samarth. Thanks, guys. Goodbye.